अंधेरे में रोशनी है, नई दुनिया बनाने चली है, देखो देखो यहाँ आ गई है। इसकी आंखों में है एक उजाला, तितलियों ने इसे होगा पाला, सबको मुश्किल से इसने निकाला। सोनी 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 सुपर सोनी 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 सोनी। दानी दमा मा मा गा गा मा दा गा मा मा गा मा मा दा गा नी दानी दानी नी दानी नी दानी नी दानी नी दानी दा गा मा दा गा मा दा नी दा दानी दा मा दा गा मा दा नी दा। सोनी सब रस्मों रवाज बदलेगी, जो कल ना बदला वो आज बदलेगी, अपना पुराना समाज बदलेगी, इस पर अंधेरों का राज बदलेगी। सोनी सोनी सुपर सोनी। Sabine, I can't hear you. आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। Okay, so I think Sabine is facing some technical issues. So I think me and Nageen, we should start and then Sabine can join. So welcome everybody. Nageen, would you like to introduce yourself first? Can you guys hear me I now? think Sabine is here. Okay, sir. Okay. Welcome back, Sabine. Yeah. Let's wait for 2 more minutes. Can you hear me clearly? I can hear Yeah. you, Nageen. Can you guys hear me? Yes, we can hear you now. Yes. So then let's start then. Sorry about that mess. Assalamu alaikum everyone. My name is Sabine and I'm here representing Samaj. For those of you who are new here, जो हमारे नए viewers हैं, उनके लिए मैं एक brief सा introduction देना चाहती हूँ my organization का before we start. Samaj is a non-profit organization headed by Seher Mirza. हम लोग का ऑफिस लाहौर में बेस्ड है और हम लोग something that's unique about Samaj is that we use creative mediums to raise awareness about and talk about important societal issues such as human rights and freedom of speech, ठीक है, and gender equality. हमारा सबसे latest project है that's called the Girls Sexual Abuse Prevention Program, which has been signed in partnership with the German Embassy. Under this project हम लोगों ने एक बहुत cool सी animated series बनाई है जिसका नाम Super Sony है, which is available on YouTube. Most recently, something that actually हमारा जो topic है आज का, that's educating children on child abuse, which is the main aim of GSAP. Most recently, हम लोगों ने we have started taking Super Sony to schools across Punjab in what we're calling interactive screening sessions. We are screening episodes of Super Sony in schools और हम बच्चों के साथ इस पे बातचीत करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं और उनको एजुकेट करते हैं in a very subtle way because that is one of the main aims of GSAP कि हम लोगों ने बच्चों को समझाना है कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है बट उनकी ज़ुबान में, उनकी लैंग्वेज में in a way that doesn't scare them और so for now हम लोग की जो workshops हैं पंजाब में हैं but we actually recently got a very cool award. Berlin Ale ने GSAP को Super Sony को award किया है, which is the Mastercard Talent Mastercard Enablement Program.
And we'll be using this award to take Super Sony to other provinces, Sindh and Balochistan. इसको हम translate करेंगे into the regional languages, and then we'll be taking it to schools across Pakistan, inshallah. अब इस हमारी workshops वाले काम में हमारा साथ दिया है जो बहुत super duper ladies ने, Salwa, Rana and Nageen Yousaf. Let me just give a brief introduction both of them before we start officially. So Nageen is an artist by profession, and she has also recently done a professional certification in clinical psychology from Kinnaird. Nageen has an aim to create mental health awareness through her art and through public speaking as a public psychosocial educator. Hi, welcome Nageen. Hello. And How are you? Salva Rana is a human rights lawyer and a researcher with over 5 years of experience working in the development sector. सलवा ने हमारी अभी तक वर्कशॉप इस्लामाबाद में कराई है. नगीन and I have been going to schools in Lahore. So let's start officially. Assalamu alaikum Salwa, assalamu alaikum Nageen. Thank you so much for joining us. Walaikum salam. Thank you Thank so you, much for Sabine, for inviting me. having us. Acha, let's just jump right into it, Salwa. I want to talk to you about this first because Nageen और मैं तो खैर इकट्ठी रहे हैं लाहौर में schools में. Hmm. So I want to know what your experience was like. आपका थोड़ा सा feedback, just a very brief sort of feedback. We start off करने के लिए कि आप इस्लामाबाद में अपने वो workshops conduct करवाई हैं अभी तक in इस्लामाबाद and रावलपिंडी. तो कैसा रहा आपका experience? आपको कैसा feedback मिला बच्चों से, teachers से, management से? Okay, so हाँ, we had 4 workshops. 3 हमारे इस्लामाबाद में थी और एक रावलपिंडी में थी. और these were mostly schools that were sort of away from the city. और you can say कि इस्लामाबाद के जो sort of suburbs हैं वहाँ पर these schools were located. So अब ये वो बच्चे हैं जिनके साथ आप usually normally interact नहीं करते. So it was, I think overall for me, it was a good experience. And also for me, there was a lot of learning. So when I was planning these workshops, I expected there to be some kind of hesitation from the children. मुझे लगा कि they would be shy or they would not openly talk about it. But I think I was pleasantly surprised when I got a fairly positive response from the children. They were quite confident in talking about good touch and bad touch, right? So I think a lot of the credit goes to सुपर सोनी का जो कैरेक्टर है क्योंकि उसकी स्क्रीनिंग हमने जो है वो ट्रेनिंग सेशन से बिल्कुल शुरू में कराई थी बिफोर वी स्टार्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग सो आई थिंक in order to get them comfortable, that was a very, very good idea because they saw, okay, you know, there is this girl, she's around their age, and she's going to school, she's curious about animals, so she goes to look at this pigeon and then this person inappropriately touches her. So when we started off on that note, I think they really sort of were engaged in the story itself. और उसके बाद उनको था कि अच्छा now there have been so many characters that we've seen in the Super Sony cartoon कि now we can talk about it. So I think कि yes, on the confidence end, इतना ज़्यादा मुझे difficulty नहीं face करनी पड़ी. Whatever questions I would ask them, they would interact, they would engage quite actively. I think with the teachers, it was also sort of, I think with teachers थोड़ा सा ये था कि they were not that open in talking about it because they were more trying to like understand कि where is this conversation going कि हम उनसे क्या expect करें as teachers because उनके लिए काफ़ी daunting सा एक topic है कि अच्छा child sexual abuse, but how can we as teachers help, right? So a lot of our discussions would mainly go towards okay, how can they create a safe environment? But overall, I think it was a good experience. I didn't think that I would get this level of engagement, but I did. That's very cool. बहुत अच्छा लगा आपकी experience सुन के सलवा. हम लोग actually
नगीन, मैंने आपसे पूछा था कि at first we were framing these as workshops, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, we don't want these to be workshops. हमने इसको नाम दिया interactive screening sessions का, और उसका मतलब मेन मकसद यही था that we wanted these sessions to be interactive. इसलिए हम लोगों ने लिमिट भी इसमें स्टूडेंट्स की रखी थी 40 per session. There was one school in Lahore जो जहाँ पे हमें कहा गया कि आप 500 बच्चों को accommodate कर लें एक सेशन में. But then we said कि नहीं, 500 बच्चे हम लोग उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू वांटेड दीज सेशंस टू बी इंटरेक्टिव. हम चाहते थे कि बच्चे एंगेज करें, हमें उनका फीडबैक मिले, हमें हर बच्चे से इंडिविजुअल लेवल पे बातचीत करने का मौका मिले. नगीन, आपके साथ तो बहुत अच्छा बच्चों ने इंटरेक्ट किया है लाहौर की वर्कशॉप्स में अभी तक. तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको किस तरह का बच्चों से फीडबैक मिला, आपने उनको मतलब if you have to judge कि where do the children in our schools in Pakistan stand, इस तरह की नॉलेज उनके पास कितनी थी और कितनी ज़रूरत है उनको मज़ीद इस चीज़ के बारे में सिखाने की, एजुकेट करने की. अच्छा, जैसे कि सभी मेरे साथ ही थी, तो सलवा के लिए ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस नया होगा कि हमने डिफरेंट लेवल पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया. तो पहले जाते ही तो मेरी कोशिश ये थी कि बच्चों के साथ उनके लेवल पे जाके उनसे बात की जाए. तो उनसे हमने पूछा कि आपको क्या लगता है, हम आपको क्या दिखाने लगे हैं, और ये जो एनिमेशन है ये किस बारे में होगी. और फिर आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन करना था हमने. तो कि अगर वो कोई सुपर पावर्स चाहते हैं तो वो क्या सुपर पावर होगी. लेकिन मुझे किसी पॉइंट पे लगा कि आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन ये सुपर पावर से पहले जो आपकी नेचुरल सुपर पावर होती है हर किसी की, बच्चों की या बड़ों की, वो पूछते हैं. मैंने उनसे उनके ड्रीम्स के बारे में पूछा. ओवरऑल जो एक्सपीरियंस ये रहा कि जितनी छोटी क्लास के बच्चे थे उतने ज्यादा उनके पास ड्रीम्स थे. बच्चियां, बेसिकली हमने सिर्फ लड़कियों के साथ काम किया है. जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही थी, बच्चियों के ड्रीम्स, मैंने मजाक में कहा, भी बच्चियां हंस रही थी. मैंने उन्हें कहा कि ऐसे लग रहा है कि जैसे 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 आप लोगों की एज बड़ी होती जा रही है, सो यू पीपल आर डेड इनसाइड. तो हंस रहे थे आगे से. लेकिन ये है कि लिटिल ह्यूमर थोड़ा सा इस तरह करके जब उनसे बात की, तो वो जो सीनियर गर्ल्स थी वो थोड़ा सा ओपन अप होना शुरू हुई. सो बेसिकली जो भी हमने स्कूल किए उन स्कूलों में सिमिलैरिटी ये थी कि बच्चियां जो थी ना, जैसे जैसे उनकी एज ज्यादा होती जा रही थी, उनको थोड़ा सा एक फियर होता जा रहा था कि वी आर नॉट मोर देन एनीथिंग, के ये शी इज गोइंग टू बी अ मदर और अ हाउसवाइफ और somebody not in her entity. सो उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म होती जा रही थी. सो गर्ल्स फ्रॉम द 6th क्लास हैड लाइक बिग ड्रीम्स, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी वैसे भी. लेकिन जैसे जैसे 8th क्लास है, 7th है, 9th है, तो 9th तक तो यहाँ तक कि ये लेवल आ गया था कि 9th क्लास की बच्चियां कहती हैं किसी तरह हम यहाँ से कंट्री से भाग जाएं. और वजह क्या है, यही कि मतलब पीपल अराउंड देम दे डोंट अंडरस्टैंड कि लड़कियों के भी ड्रीम्स होते हैं. वो अपार्ट फ्रॉम कोई रिलेशन चला रही हैं, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज एनी वन, दे हैव देयर ओन सेल्फ, कि वो खुद उनसे उनसे पूछा नहीं जाता, उनको बताया जाता है कि उन्होंने क्या करना है. सो ये चीज हमने बहुत थोड़ी सी सैड थी, बल्कि काफी सैड थी ये देखना. लेकिन ये कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके ना, और सुपर सोनी दिखा के उन्हें ये बताया गया कि सुपर पावर्स अपनी आपने अंदर से उजागर करनी है, तो काफी अच्छा रहा कि बच्चियों को थोड़ा सा ना मोटिवेटेड फील हुआ. क्यों सबीन, आप इस बारे में बताएं और कुछ. बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू. और मतलब दिस इज जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट. इट जस्ट शोज हम लोग एज अ सोसाइटी किस तरह अपनी बच्चों को बस ये सिखा रहे हैं कि आपने बस बड़े कि यू शुड नॉट हैव एनी ड्रीम्स, एनी गोल्स, आपका बस एक ही काम है लाइफ में. एंड वो, यू आर वेरी राइट नगीन, दिस इज समथिंग दैट वी नोटिस्ड इन बोथ स्कूल्स दैट वी वेंट टू. एक हमारे पास छोटी क्लास थी और एक बड़ी क्लास थी, दोनों ही स्कूल्स में, और दोनों में हमने ये नोटिस किया था कि छोटे बच्चों की जो है ना, दे आर वेरी वोकल और एवरीथिंग. और जब ये ड्रीम्स वाला क्वेश्चन नगीन ने पूछा तो सारों के अपने अपने थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है. मोस्ट ऑफ देम सेड कि हमने आर्टिस्ट बनना है. एंड देन नगीन ने उनको बताया कि अच्छा मैं भी आर्टिस्ट हूँ. कुछ को सिंगर्स बनने का भी शौक था. और जो बड़ी बच्चियां थी ग्रेड 9 की, 10 की, उन सबको बस यही एग्जैक्टली यही था कि बस हमने यहाँ से भागना है.
तो दैट्स वेरी सैड, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इट जस्ट शोज कि हम लोग जो है मतलब वी डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ हम गड़बड़ डेफिनेटली कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनकी ड्रीम्स ही खत्म होती जा रही हैं बच्चियों की। सलवा, आप वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस? आपने कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस किया, कुछ नोट किया? Yes, I actually do want to add something to this. So I also observed something very similar in my classes, जो कि बड़ी बच्चियां थी. They just seemed a lot more, what do you call it, hopeless. And when we talked about having that relationship with your adults, so parents and teachers, उनका थोड़ा सा रिएक्शन मुझे थोड़ा सा हेजिटेंट लगा कि वो हमारी बात शायद ना सुने, या हमारा जो ओपिनियन है वो शायद इतना मैटर नहीं करे with our parents and with our teachers. क्या ब्रदर ऑलवेज स्टेप्स इन कि हमें हमारी बात नहीं उस तरह से सुनी जाती, बिकॉज जो हमने ट्रस्टेड ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज की थी यहाँ पर वी सॉर्ट ऑफ वेंट इनटू डिटेल अबाउट व्हाई यू ट्रस्ट दीज पीपल एंड व्हाई यू डोंट. So उसमें I don't want to connect to the part about the teachers that we did. जैसा मैंने शुरू में भी mention किया कि when we talk about giving children the power to decide what they want to do and what they not want to do, अब इसमें यहाँ पर छोटी सी छोटी चीज जैसे don't hug me और don't touch my hand से लेकर बड़ी बड़ी चीजें like what I want to become when I grow up, ये सारी चीजें आ जाती हैं. सो जब आपने बच्चों को वो अथॉरिटी ही नहीं दी to decide for themselves, you don't treat them as individuals, you treat them, so just because children are younger आप उनको जो है वो inferior treat करते हो. जिस तरह से when we started off हमारा एक जो था प्री असेसमेंट सर्वे में क्वेश्चन था वो ये था कि we should always listen to our elders, right? And this is something that I think we've grown up with also कि हमने बड़ों की बात जो है वो कभी हमेशा माननी है, कभी उनको ना नहीं करना, राइट? सो बट यहाँ पर वी फॉरगेट कि दिस इज टीचर्स के हमने काफ़ी जो ट्रेनिंग्स थी उसमें ये बात की कि हम भूल जाते हैं कि बच्चे जो हैं they have their own likes and dislikes, they have their own personality, and it's important to respect them and their needs and wants as much as it's important to respect someone of your age or someone older than you. Like obviously you have to discipline them, you have to teach them using the limited resources that you have, but that does not mean कि आप उनकी personality, उनकी individuality पर जो है वो compromise कर रहे हो, right? You cannot breach their trust like that or breach their privacy that way just because they are children. So I think, yeah, definitely, even as a society, we need to respect our children more and see them as individuals with their own, likes and dislikes, their own personality. So yeah, this is what I have to add on this. एग्जैक्टली आपने टीचर्स की बात की तो आई डोंट थिंक आई इन्फॉर्म द ऑडियंस। हम लोगों ने जब स्कूल्स में गए तो हम लोगों ने सेशन पहले बच्चों के साथ किया एंड देन वी हैड अ सेपरेट सेशन विद द टीचर्स एज वेल। हम लोग जब स्कूल में गए थे इन वन ऑफ दोज स्कूल्स आई नोटिस दैट टीचर्स वर वेरी वेल एजुकेटेड ऑन दिस सब्जेक्ट और वो अंडरस्टैंड भी कर रहे थे कि हाँ ये वाकई दिस इज अ रियल इशू और इसको एड्रेस करना भी ज़रूरी है। पर अनफॉर्चुनेटली आई नोटिस्ड कि कुछ शिफ्टिंग द ब्लेम वाला काम कर रहा था। नहीं, ये टीचर्स इसमें कुछ नहीं कर सकती और ये मतलब इसमें ना हम लोग का कोई हाथ नहीं होता, ना हम इसमें कुछ कर सकते हैं। ये आप पेरेंट्स को जाके बताएं, पेरेंट्स को जाके सिखाएं। आई फेल्ट लाइक दे वर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट द इशू ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। वो बस इमोशनल अब्यूज की चीज़ को पकड़ के बैठ गए थे कि अच्छा बच्चों की ग्रेड्स खराब हो तो फिर हम क्या करें, हम पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते। पेरेंट्स को ये चीज़ सिखानी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक उनको नहीं पता चलेगा तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। नगीन, डू यू रिमेंबर दैट हम लोग का जैसा का एक्सपीरियंस था? सलमा, हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इमोशनल अब्यूज के केसेस हमने बहुत ज्यादा देखे और बहुत ज्यादा कॉमन है। और केसेस जो हैं बेसिकली वो आ रहे थे, घर से आ रहे थे। और एक स्कूल जिसमें हम गए हैं वहां पे थोड़ा हमने एक चीज और की कि जिस एरिया का जो स्कूल था, हर एरिया के लोगों का बिहेवियर, उनका लाइफस्टाइल फर्क होता है। तो जिस स्कूल की बच्चियां ज्यादा उनको हो रहा था ना कि हम जो है 9th क्लास की बच्चियां थी, वो कह रही थी हम किसी तरह कंट्री से बाहर भाग जाएं। तो उस एरिया का थोड़ा सा रहन सहन इस तरह का था कि
होता है जैसे कि पार्टीज टाइप का, आई डोंट वांट टू लेबल एनीथिंग, लेकिन थोड़ा सा आपको पता भी होता है कि किस एरिया में लोग कैसे रहते हैं। सो वो उनकी लाइफस्टाइल थोड़ा लाइक एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, पेरेंट्स कम तवज्जो देते हैं बच्चों को। तो जो आप जिधर आप गैदरिंग में आप सुनते हो पेरेंट्स जो बात कर रहे हैं, बच्चे भी वही टोन बोल रहे होते हैं। सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग आफ्टर द वर्कशॉप कि हाँ सर्टन एरिया हैज दिस सर्टन काइंड ऑफ बच्चों की मेंटल कंडीशन। सो उस लिहाज से बच्चे उस कंडीशन ऑन के अच्छा कोई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है मुल्क में, ये मसला तो ठीक है, बेटर सोल्यूशन इज रन अवे, और वहां जाके बाहर जाके कुछ आप अपना सेटअप बनाओ। दूसरी जगह पे हम दूसरे स्कूल में अगर देखते हैं, वहां पे ये था कि वो दे वांटेड टू लाइक गिव समथिंग टू द कंट्री। उसमें से बच्चों के पास, लेकिन वो भी 8th क्लास की जो बच्चियां थी, उनको ये था कि दे डिडंट हैव ड्रीम, बार बार पूछने पे भी उनके पास नहीं थे कोई। लेकिन छोटी बच्चियों के भी उनके जो ड्रीम्स या उनकी जो भी चीजें थी वो फीडेड थी, लाइक बहुत सारी बच्चियां डॉक्टर इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते थे। तो इस वजह से लाइक टीचर्स का कहना ये था कि हमसे आप बात कर रहे हैं, उनको ये था कि हमसे बात करें, लेकिन ज्यादा तो पेरेंट्स का काम है, आप पेरेंट्स को जाके समझाएं ऐसे है वैसे है ये है वो है। लेकिन ओवरऑल मतलब जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई, उन्हें चाइल्ड अब्यूज पे हमने जो कुछ भी समझाया, अ, किसी हद तक लगता है कि ना, बिकॉज इफ यू सी द साइकोलॉजी एंड बिहेवियर वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, कि किसी हद तक लगता है द इमोशनल अब्यूज इज द कोर ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, जहां पे आपको मतलब जो बंदा अपना टारगेट ढूंढ रहा होता है वो भी इजी टारगेट ढूंढता है, ठीक है ना, ऐसे ही। तो इस वजह से बच्चे जहां पे निग्लेक्ट हो रहे होते हैं, इमोशनली अब्यूज हो रहे होते हैं, वो जो टारगेट ढूंढ रहा होता है उसके लिए भी आसान हो जाता है, फिर उनको उसको भी पता है कि ये बच्चा लाइक ही वो दबा हुआ है तो ये बता भी नहीं सकेगा। सो अब यहाँ पे जब टीचर से बात हुई तो वो सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात पे आने ही नहीं दे रहे थे। वो इमोशनल अब्यूज को ही एक तरह पकड़ के बैठ गए थे कि दिस इज, जैसे जैसे खुलता गया पंडोरा बॉक्स, वैसे वैसे बच्चों की कोई प्रोग्रेस नहीं है, वो ऐसे बैठते हैं वैसे बैठते हैं, हम क्या करें। सो ऑल्दो वी गेव देम लाइक थोड़ा सा एजुकेट किया कि आप भी उनकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं है कि आप सारा कुछ पेरेंट्स पे ही डाल देते हैं। मतलब अगर उनको सेफ हेवन नहीं मिल रही घर पे, तो एटलीस्ट उनको स्कूल में तो सेफ हेवन मिलेगी ना, आप उनको थोड़ा बहुत तो बूस्ट कर सकते हैं। सो ये था। बाकी सबीन आप इसके आगे बताएं। नहीं, यू आर वेरी राइट। हम लोग इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हम लोग पेरेंट्स के साथ भी वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाएंगे। दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर प्लान जी साहब के सेकंड फेज में इंशाल्लाह। तो इट्स वेरी ट्रू, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे नगीन जिस तरह बहुत फोकस करी थी कि बच्चों का पेरेंट्स के साथ अगर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा तो दैट इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग देम, इन हेल्पिंग सेव चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एज वेल। बिकॉज बच्चे ट्रस्ट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, उनके साथ हर बात शेयर करेंगे, तो बिफोर एनीथिंग बैड हैपेंस देयर पेरेंट्स वुड बी अवेयर, बिकॉज वो हर छोटी बात बच्चा अपने पेरेंट्स से शेयर करेगा जाके। तो या सलवा, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस? Yes, so I think जो नगीन ने हमें बताया about your experiences with this teacher, I find it very relatable. Um, but यहाँ पर what I did differently was sort of in the beginning of the training with the teachers, मैंने उनसे ये बात की थी कि ठीक है, हम हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे जो है वो बस पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है और उन्होंने स्कूल आना है, टीचर्स से पढ़ना है और फिर बस घर चले जाना है। टीचर्स जो है वो सिर्फ पढ़ाने के लिए हैं। So we had this discussion, and I think a lot of teachers actively participated. I got a very positive response when we talked about how children are society's responsibility. So थोड़ी सी हमने बाहर कंट्रीज की एग्जांपल ली कि जब बच्चा जो है वो वहाँ पर, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका या अगर आप यूरोप की एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ पर इफ़ अ चाइल्ड इज़ abused और वो स्कूल में ऐसा टीचर्स को लग रहा होता है, तो दे कैन इन्फॉर्म द सोशल सर्विसेज और जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज होती हैं, एंड if the child is neglected severely or abused severely, तो वो in many cases uh, it's taken away from the parents, ठीक है? So because they think that children are the society's responsibility, it's not just two persons responsibility who have given birth to him or her.
So this is something that we discussed very in the very beginning of the training. And then जब पहली जो हमारा जो टॉपिक है सब टॉपिक था विद इन द वर्कशॉप विद द टीचर्स वो ये था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ अब्यूज. सो वहाँ पर भी बिफोर वी स्टार्टेड ऑफ वी टॉक्ड अबाउट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट physical abuse, neglect, emotional abuse, when the topic is just sexual abuse, right? So we got this out of the way by discussing how not like one kind of abuse is never alienated. It's not, it doesn't operate in isolation. Okay, where there is physical abuse, there most likely will be neglect and emotional abuse. Where there is emotional abuse, there is likely to be other kinds of abuse as well. अब जैसे नगीन ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की कि children who are emotionally abused or physically abused will not trust their abusers even if they are parents. So they will उनकी ज़ाहिर सेल्फ एस्टीम पे इफेक्ट पड़ेगा and they will step out of the house to look for these relationships जो उनको प्रोटेक्ट कर सके और जो उनको प्यार दे सके. बिकॉज तुमने ये बात की थी कि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, ऑल दे वांट इज अफेक्शन. एंड दिस इज अ लॉट जो सेक्सुअल चाइल्ड सेक्सुअल प्रेडिटर्स होते हैं ड्यूरिंग द ग्रूमिंग प्रोसेस दैट दे डू इज डेवलप दिस रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट कि वी आई विल बी गुड टू यू, आई विल यू नो गेट यू दिस गेट यू दैट. तो वो जो रिलेशनशिप ट्रस्ट का होता है जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बिल्ड कर पाते, या एक बहुत डैमेजिंग एक बहुत टॉक्सिक सा उनका ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है अपने पेरेंट्स के साथ, वही वो रेप्लिकेट करते हैं विद देयर अब्यूजर, राइट? सो वहाँ पर इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू teach a child a very non-toxic way of love and affection and how to build up their self-esteem. So what can you do as teachers? As teachers, what you can do is if you think a child is abused at home, आप you can be that adult in their life जिसके पास वो आ सके. So it's not necessary कि अगर parents abusive है तो teacher भी जो है वो बच्चे को abandon कर दे. So these are discussions that we had in the very beginning कि you can be that one person जिसके पास बच्चा आ सके. अगर ठीक है आप escalate कर सकती हैं वो issue to the management, to the parents, that's great. But in many cases you can't do it. So you can protect the child as much as you can in your capacity. So यहाँ पे I did get a good response from the teachers and they understood कि अच्छा why does sexual abuse sort of translate into other types of abuse. So we had a good discussion on this end. The fact that you also had the same experience just goes to show कि this, I think, does not have anything to do with class. नगीन जैसे आप भी बात कर रही थी कि हम लोगों ने अगर आप कही थी क्लास में आपको ये डिफरेंस फील हुआ, तो आई फील लाइक ये हर क्लास में हर लेवल पे ही हो रहा है, ये पेरेंट्स की तरफ से निगलेक्ट that does not necessarily have anything to do with their social status or the class. हम थोड़ा सा डिस्कशन को वापस बच्चों की तरफ लेके आते हैं. You made some excellent points, Salwa. लेकिन सिंस आवर टॉपिक इज एजुकेटिंग चिल्ड्रन, तो फिर हम थोड़ा सा वापस बच्चों की तरफ लेके आते हैं डिस्कशन. हम लोग समथिंग दैट आई फाउंड रियली कूल इज दैट ड्यूरिंग वन ऑफ द वर्कशॉप्स एक बच्ची ने जब नगीन उनसे फीडबैक मांगी थी कि आपने अच्छा ये एपिसोड देखी तो इसका थोड़ा सा आपको किस तरह का लगा, हमें फीडबैक दो. तो एक बच्ची ने कहा कि आई जस्ट फील लाइक कि ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक बच्ची, हम मतलब आप लोगों ने एक सुपर हीरो दिखाया है, तो ये नहीं कि आउट ऑफ नो वेयर एक सुपर हीरो आ गया और उसने आके बच्चियों को बचाना शुरू कर दिया. दिस इज समवन हु वेंट थ्रू समथिंग हरसेल्फ. उसने खुद इस तरह की सिचुएशन फेस की है जिसना फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा, और वो अपने एक्सपीरियंस में से गुजरने के बाद नाउ शी इज हेल्पिंग अदर गर्ल्स एंड सेविंग अदर गर्ल्स फ्रॉम फॉलोइंग इनटू अ सिमिलर सिचुएशन. तो आपको इस तरह का कोई बच्चों की तरफ से फीडबैक मिला सलवा, या किसी स्पेसिफिक एपिसोड पे अगर आपको कोई रिस्पांस मतलब याद हो कि अच्छा इसमें मुझे किसी बच्चे ने ये कहा था, समथिंग दैट स्टूड आउट टू यू? Most of the responses that I got were very similar in nature. They were very excited by the fact that this superhero was a girl and a young girl, right? And they one of the things that a girl, a very young girl, actually, I think 2 या 3 क्लास की थी, she pointed out कि ये उसकी अम्मी के मटके में से आया. So this is basically the mother trying to protect the child. So you know how our parents protect us all the time. So I thought that was very nice, very cute. But जो सबसे ज़्यादा engagement interaction हमें मिला था वो second episode में मिला था, जो सारा के बारे में था, which was basically about
a relative. So वहाँ पर जब हमने ये एक्सरसाइज की थी कि आप बताएं कि what are your boundaries and what do you like and what do you not like. So I think interestingly a lot of children were very uncomfortable with some of their relatives. Of course, अब वो इतना openly जो है बात नहीं करेंगे in the classroom where there's so many people present, but there was a feeling, and I think even the teachers noticed this, that जो पेरेंट्स फोर्स करते हैं बच्चों को टू हैंग आउट विद देयर रिलेटिव्स कजिन्स, there is a lot going on there, and bache are actually not entirely comfortable hanging out with these people or being forced to do what, like sort of sit with them, talk to them, hug them, kiss them. A lot of kids did write this down in their notebooks के हमें अपने relatives को hug करना नहीं पसंद, हमें अपने cousins को hug करना नहीं पसंद, so we don't like it. So I think in our discussions we just kept on going back to the Sara वाला episode के वो इरफान अंकल उनके घर में थे, which said a lot. बहुत subtle तरीके से the girls were talking. So it was quite an emotional moment for me also, and I think for a lot of the teachers to sort of realize that yes, the abuse that most children face is coming from inside the house. बाकी जो थर्ड एपिसोड था उसमें आई गॉट सम रियली गुड फीडबैक कि एवरी टाइम दैट वी गेट हर्ट हमें पेरेंट्स ही ब्लेम करते हैं. सो दे सेड कि हाँ ऐसे ही होता है, प्रिंसिपल भी हमें ब्लेम करती है, टीचर भी हमें ब्लेम करती हैं कि आप क्यों खेलने गए थे, आपको नहीं करना चाहिए था, आप कुछ गलत कर रहे हो. स्पेशली द ओल्डर के, सो ये जो 13-14 अर्ली टीन्स वाली लड़कियां थी, उन्होंने बोला कि हाँ हमें ये सुनने को मिलता है कि आप सही से दुपट्टा नहीं लेती, या आप अकेले में उधर कोई स्कूल का कोई आइसोलेटेड जगह है वहां पर जा रही हो. सो दिस इज द फीडबैक दैट आई गॉट अबाउट द थर्ड एपिसोड. बच्चों को इतना एंगेजिंग नहीं लगा थर्ड एपिसोड. द थर्ड एपिसोड वाज मोर जो थोड़ी बड़ी बच्चा थी उनके लिए ज्यादा इंटरेस्ट का था. But yeah, so there was this is the kind of feedback that I got from the children. You're right. I think जो सेकेंड एपिसोड थी सारा वाली, उस पे वाकई हम लोगों को भी ज़्यादा हम लोगों ने इस पे रिस्पॉन्स देखा था in one of the schools especially, because again that is something that was very eye opening for most students, क्योंकि हम लोगों ने सर्वे में भी किस तरह क्वेश्चन लिखा था that your home is always safe for you, और उसको काफ़ी बच्चों ने ट्रू किया हुआ था. तो आफ्टर वॉचिंग दैट एपिसोड दे रियलाइज कि अच्छा दिस इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू, हमारे घर में भी हमें खतरा हो सकता है. और ये हम लोगों का ही कसूर है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को शुरू से वही ब्लाइंड ओबीडियंस वाला कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है कि बड़ों ने जो कह दिया बस वहाँ पे यू जस्ट हैव टू से यस, यू कांट से नो टू समथिंग दैट एन एल्डर सेज टू यू. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो थोड़ा सा बच्चों के लिए इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दो, एंड समथिंग दैट आई अप्रिशिएट अबाउट द एपिसोड कि वो बहुत सटल तरीके से बताया गया है, एंड आई एम श्योर दैट एपिसोड वुड हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. नगीन, आप काफ़ी देर से खामोश हैं, तो आप बताएं कुछ किसी एपिसोड पे आपको बच्चों का फीडबैक स्पेसिफिक याद हो तो. वो सुपर हीरो वाला जो हमने जो फर्स्ट एपिसोड दिखाई थी ना, तो बच्चियां काफी क्यूरियस थी, वो कह रही थी कि ये तो सुपर हीरो है, तो ये तो बचाने आ रही है, तो हम कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं. तो कहते हैं हम तो नहीं ना वेट कर सकते कि कोई सुपर हीरो आए वो हमें बचाए. तो खैर फिर उस पर फर्दर क्वेश्चनिंग फिर मैंने की कि आपको क्या लगता है, सबसे पूछा कि कैसे लगता है. तो बच्चे कह रहे थे कि हाँ ऐसा है कि हम कोई कैमरा रख सकते हैं अपने पास, हम कोई रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो उस पर हम ये कह रहे थे कि फर्ज करें कि आपके पास कोई कैमरा वगैरह नहीं होता, तो तब आप क्या करते हैं. फिर उसके बाद हमने वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि आपके पास एटलीस्ट 3 जो हैं, आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिन पे आप ट्रस्ट कर सके, और आप उनके साथ अपना रिलेशनशिप इस तरह का बिल्ड करें कि आप ट्रस्ट कर सकें. अच्छा, उसमें से भी काफी बच्चों को, जैसे कि आपने बात की कि पेरेंट्स यकीन नहीं करते और प्रिंसिपल भी यकीन नहीं करते, तो उस पे भी फिर हमने बच्चों से पूछा कि इफ यू कांट बिल्ड द ट्रस्ट, सो बात फिर वही आ जाती है कि बच्चों का रिलेशनशिप नहीं अपने पेरेंट्स के साथ सही बन रहा है या ये वो वगैरह. लेकिन ये कि बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिव थे,
ओवर सारी एपिसोड देखे, और वाकई जो आर्ट जिस मीडियम के थ्रू हमने उनको दिखाया है सारा कुछ, और डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एक स्कूल में बच्चे बहुत सीरियस थे और एक स्कूल में बच्चे बहुत हूटिंग कर रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे जब वो उसको पंच करती थी और कहते थे यस यस यही यही होना चाहिए इसके साथ। तो काफी अच्छा रहा। तो सलवा आप बताएंगे कि किस तरह का हुआ कि बच्चे लाइक बहुत एक्साइटेड हो गए उसको एक्शन को देख के? स्पेशली जो छोटे बच्चे थे, जिस तरह से आपने बोला व्हेन शी वुड गो टू सॉर्ट ऑफ हिट द, ये जो इरफान अंकल थे सर शाहरुख को जब वो पुश किया था आउटसाइड, तो दे वर वेरी वेरी एक्साइटेड, दे वर लाइक यस यही होना चाहिए। दे अंडरस्टूड कि व्हाट ही वाज डूइंग वाज रॉन्ग, एंड दे अंडरस्टूड दैट सुपर सोनी हैड टू कम एंड do this to them because they were bad people. So I think जो मैसेज सुपर सोनी के थ्रू वो ट्रांसफर करने की कोशिश करते, दे एक्चुअली गॉट इट। सलवा, डू यू थिंक कि बच्चों ने ये चीज़ अंडरस्टैंड की होगी? बिकॉज काफ़ी लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे इवन व्हेन वी रिलीज द ट्रेलर, और हमारे एक्चुअली स्क्रीनिंग सेशन के दौरान एक बच्चे ने भी ये बोला आफ्टर वाचिंग द फर्स्ट एपिसोड, जैसा अभी नगीन ने भी पॉइंट आउट किया कि हमेशा रियल दिस, ये तो फैंटेसी है ना, रियल लाइफ में तो सुपर हीरो नहीं एग्जिस्ट करता जो हमें बचाने आ जाएगा। तो बट देन वी सॉर्ट ऑफ कवर्ड दैट इन द सेकेंड एपिसोड, जब वो सोनी आके उनको बच्चों को बताती है कि मैं तुम लोगों के अंदर की सुपर हीरो को जगाने आई हूँ। ये सुपर हीरो जो है हम सबके अंदर है। तो डू यू थिंक चिल्ड्रन वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? Yeah, so after the, I think almost all of चारों स्कूल्स में कोई ना कोई बच्चा जो था वो खड़े होके उसने ये बोला था कि मैंने, so I asked them कि अच्छा, what is the message that Super Sony wants you to know, what is it that she's trying to teach you? So कोई ना कोई ज़रूर खड़े होके बोलता था कि शी वॉन्ट्स कि हम अपने अंदर की सुपर पावर को जगाएं। सो आई थिंक वहाँ पर जब डिस्कशन स्टार्ट हुई, सो जिनको नहीं भी समझ आया उनको आहिस्ता आहिस्ता दे फिगर इट आउट कि अच्छा हम किन सुपर पावर्स की बात करें, हम ये नहीं कह रहे कि आप लाइक बटरफ्लाई बन जाओ और आप उड़ो, बट योर सुपर पावर इज बेसिकली टू स्पीक अप, और टू, अगर आपकी जो एक अंदर की फीलिंग है, दिस इज समथिंग दैट आई रियली फोकस्ड ऑन इन some of my training, most of my trainings actually, कि every person has this feeling from inside as adults and as children कि हमें कोई बंदा नहीं अच्छा लग रहा होता, right? So you don't like the way they look at you, you don't like the way they talk, you don't like the way they behave with you, so that is your superpower, ठीक है? वो आपने यूज करनी है, और यू हैव टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। सो आई फोकस्ड ऑन द फैक्ट इट्स नॉट नेसेसरी कि कुछ ना कुछ बुरा हो चुका हो एंड यू पंच द पर्सन और यू किक समवन, यू सॉर्ट ऑफ टेक प्रीएम्प्टिव मेजर्स कि आप अपने आप को एक सेफ एनवायरनमेंट अपने लिए कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो योर सुपर पावर इज बेसिकली हाउ यू मेक योर सेल्फ सेफ, राइट? सो आई थिंक यहाँ पर बच्चों से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड दे वर लाइक ओके विल डू दिस, विल डू दैट, हम घर जाके ये करेंगे वो करेंगे, पेरेंट्स को भी दिखाएंगे सुपर सोनी। सो या आई वाज अ लॉट ऑफ फन डूइंग दिस एक्सरसाइज। अच्छा, एक मैसेज ये भी बहुत अच्छा था कि बहुत अच्छा था जब उसने कहा कि मुझे सर बुला रहे हैं, तो उसने कहा कि तुमने अकेले नहीं जाना, ये याद रखना हमेशा, ऐसी सिचुएशन में अकेले नहीं जाना। बच्चों ने पॉइंट आउट किया था कि वो जब अच्छा ये बच्चे बहुत सी चीजें देखते हैं जो हम शायद अडल्ट्स नहीं देख पाते। सो जब मैंने 2-3 बार एपिसोड देखा, आई डिड नॉट नोटिस कि बीनेश की फ्रेंड्स जो हैं वो बाहर खड़ी हैं सर शाहरुख के पीछे, जो ग्लास की विंडो थी। आई वॉज ओनली फोकस्ड ऑन बीनेश एंड सर शाहरुख, but the children pointed it out to me in the very first training कि वो आपने देखा था वो बाहर खड़ी हुई थी, because I assumed कि they were outside the classroom. So then when I went back to see, I was like, oh right, they were watching from the window. So yeah, they immediately picked on this and they said कि हाँ भाई जब भी कोई टीचर बुलाए हमने अपनी सारी फ्रेंड्स को साथ लेके जाना है और उनको बाहर खड़ा करना है।
I'm so glad to hear that because again सुपर सोनिक का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि बच्चों को एक अच्छा सुपर हीरो बना के दिखाओ और even not just to inform them about child abuse, the purpose of these series was to educate them. And I'm so glad to hear कि ये छोटे छोटे messages जो इसमें हम लोगों ने dialogues के through डाले हैं, the students were picking up on those dialogues and learning from it. So that's so cool to hear. अच्छा थोड़ा सा अब हम आते हैं towards the challenges that you might have faced. I'll I'll just share something that was a bit disappointing for me. In one of the schools that we went to, हम लोगों को so we noticed that management में हमें थोड़ा सा रिजर्वेशंस पहले तो नज़र आ रही थी एंड देन हाफ वे थ्रू द वर्कशॉप हमें बुला के बताया कहा गया बेसिकली कि अच्छा बच्चों को आप पेरेंट्स का बता रहे हो कि आप घर पे भी सेफ नहीं हो लेकिन इनको ये भी बताओ कि बच्चे भी अब्यूज़ करते हैं अपने पेरेंट्स को एंड देन अगेन हमें ये भी कहा कि अच्छा दीज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ओ लेवल सून इनको पता होना चाहिए कि इनको आप ये बताएं कि this is not it's not right to gang up on male teachers if you're getting a negative vibe from a male professor, a male teacher. So it's not right to just tell your friends and then make a big deal out of it और फिर उनकी complain करना आके. तो हर छोटी सी negative vibe पे इस तरह react करना सही नहीं है. तो it's important कि आप बच्चों को ये भी बताएं. So this was very shocking for me because again this is the kind of these are the kind of beliefs that we are trying to break here. कि बच्चों को हम लोग साइलेंस ही करते जाते हैं कि नहीं इतना किसी भी बात को इतना बड़ा इतना उछालना नहीं है अब तुम्हें ही गलत लग रहा होगा मे बी यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग तो थोड़ी सी नेगेटिव वाइब पे आपने कुछ शो नहीं डाला तो दैट वाज वेरी स्केरी मतलब मैं सुन के एक्चुअली परेशान हो गई थी कि मतलब इस तरह की सोच दिस इज समथिंग दैट आई heard about it, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना that was very disappointing for me. सलवा आपने इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस किया कोई हेसिटेंसी किसी मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से या कुछ anything like that? So Sabine, I think my experience on this end was, I would say, a lot more positive than yours. इस तरह का सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स थी स्कूल्स की जिन्होंने मुझसे बिल्कुल शुरू में बहुत पोलाइटली बोला कि प्लीज़ ऐसी लैंग्वेज ना यूज़ कीजिएगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं और फिर हमारे लिए मसला बनता है क्योंकि हम तो करवाना चाहते हैं इन चीज़ों पे अवेयरनेस रेजिंग लेकिन ये ना हो कि बाद में पेरेंट्स आ जाएं और बोलें कि आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को क्योंकि यहाँ के पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव हैं सर से मैंने शुरू में बोला कि ये इस्लामाबाद की वो सेक्टर्स है विच आर लाइक सॉर्ट ऑफ very far away from the main city. So they kept highlighting this part कि ये जो area है यहाँ पर parents conservative and we don't want to create trouble for ourselves. The second principal also said something similar. She said कि यहाँ पर मैं तो अंडरस्टैंड करती हूँ आप क्या करवाना चाह रही हैं लेकिन यहाँ पर बच्चे बहुत कंजर्वेटिव है मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन आर डूइंग हिफ्स एंड यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इस्लामिक एजुकेशन पर so they might actually misinterpret what you're trying to do as anti-Islamic. So what I want you to do is focus on Islam more and I mean आप लोगों की जो ट्रेनिंग मटेरियल्स आई थिंक हम सबका ऑलमोस्ट सिमिलर ही है एंड देयर इज वेरी लिटिल टॉक अबाउट रिलीजन सो शी वाज सेइंग कि फोकस ऑन महरम एंड ना महरम तो वहां पर आई वाज अ बिट I had to struggle a bit to sort of explain to her कि the issue with महरम and ना महरम is कि even your mahrams can abuse you and that is the issue with Pakistan because we think that these people cannot. So you have to protect yourself from everybody. So the mahram na mahram is something that I might not be able to bring into the training because that would mislead the children. So yeah, this is some of the challenges that I faced. But I think overall the adults that I interacted with in Islamabad and Pindi were a lot more receptive and they were just like नहीं और होना चाहिए हाँ they I'm not sure if this is a challenge this is more of like a feedback but I'll just add it here they said कि we need more trainers for the boys so they said कि boys में बहुत issues है they play doctor and stuff like that so I was like okay we can look into that so they यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा encouragement मिली थी in Islamabad with teachers मैंने शुरू में थोड़ा सा बताया था about the challenges वो यही था
to sort of basically understand that children are allowed to create their boundaries. So यहाँ पर the teachers were a bit like अच्छा बच्चे तो बदतमीजी भी करते हैं ये करते हैं, but वहाँ पर I think as a trainer I really had to go into the detail of why बच्चे बदतमीजी करते हैं. बच्चे are not inherently बदतमीज, हम उनको बदतमीज बनाते हैं एज अडल्ट, उनको जिस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है. सो या ये छोटी छोटी चीज़ें थी विच आई सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल विद अ बिट. उसके अलावा आई कांट थिंक ऑफ एनी मेजर challenges that I might have faced. So it's nice to hear कि अगर कोई religious था, so the fact that they actually allowed us to host our screening sessions there, that's a good start, because हम लोग again vulgar language को बिल्कुल भी use नहीं कर रहे, और बच्चों के साथ we've been very careful. हम लोगों ने बहुत subtle terms use करनी है. Teachers के साथ तो हम openly बात करते हैं, but with the students we've been using very subtle like symbolism भी कुछ ऐसे नहीं है. So, and again, just Salwa? one second, आपने जो boys वाली बात की, Salwa, I just wanted to point this out कि we are planning on doing a project on boys abuse as well in the future. उसका ये है कि we could have incorporated that with this program, लेकिन again उसको हम एक different तरह से approach करना चाह रहे हैं. Boys को educate करना, that's a totally different approach. So Yeah, we will yeah. be doing that in the future, inshallah. Yes, Nageen, over to you. हाँ, जो आपने वो महरम और नामहरम वाली बात की, तो वो बेसिकली तो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो आप समझाना चाह रही हूँ, उसको तो उन्होंने लाइक बॉक्स में बंद कर दिया ना, मतलब Yeah, यू कुडंट टॉक अबाउट इट. सो हाउ डिड यू हैंडल इट, लाइक फिर आपने किस तरह किया, कन्वे कैसे किया सारा मैसेज? Okay, so again, I'll be honest with you. I told the teacher, I told the principal that this concept is a bit problematic, so I'll see if I want to talk about it or not. But I did explain to her कि देखिए महरम ना महरम होता है. आप कोई भी आदमी ले लें, आपको मैं न्यूज़ में अभी दिखा सकती हूँ, fathers, brothers, sons, all kinds of men are abusive. So the महरम ना महरम thing does not work. She said कि नहीं नहीं आप कर लें. But I mean, it was not something that I was comfortable with. So यहाँ पर I took the liberty of not bringing it at all to the students. And I did not touch upon any religious aspect at all. Meram or na meram to bilkul bhi nahi. And thankfully, the principal noticed this, and but she did not bring it up later कि आपने ये बात क्यों नहीं की. I think उनको during our session जो था, हमने जब सारी स्क्रीनिंग कर चुके थे, जब वो सारी बात सुन चुकी थी, she was able to better understand कि why this meram and na-meram thing might have been inappropriate. So I was not asked again to do it. वेरी नाइस. लेकिन आप भी आई थिंक अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बिकॉज ये जो मैंने अभी बात बताई थी, जो हमें एक स्कूल की मैनेजमेंट ने कहा था कि जो बैड वाइब्स वाली बात के प्रोफेसर से, आई आस्क्ड यू टू टैकल दैट, तो आपने किस तरह टैकल किया, आप वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. लकीली मैंने हमारे पास टाइम नहीं था, लाइक आई वाज हैंडलिंग द माइक एंड आई वाज डूइंग द टॉकिंग. सो सबीन केम टू मी एंड शी सेड के शी सेइंग दिस. तो सबीन ने, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, तो सबीन ने मुझे जल्दी में एक छोटा सा मैसेज दिया कि एग्जैक्टली योर वर्ड. सबीन, आपने जो मैसेज दिया एग्जैक्टली योर वर्ड. ये बात तो मैं आपसे कर नहीं सकी थी बिकॉज वो ओ लेवल वाली. उन्होंने कहा कि ओ लेवल की लड़कियां हाँ फ्यूचर में मे बी वो टीम अप और कुछ किसी टीचर के खिलाफ कुछ इस तरह बोल देंगी, तो ये वो. सो मतलब मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता थी कि वो स्नप करना चाह रही थी या क्या करना चाह रही थी. तो उतने टाइम में जो उन्होंने मुझसे शेयर किया सबीन ने, सो मैंने इसको फिर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा. अगर स्टोरी पूरी ना सुनी होती तो, लेकिन अच्छा ही हो गया. मैंने फिर उनको बच्चों को कहा कि अगर आपको कोई टीचर फील होता है कि वो आपको उसकी से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, तो आप एक दूसरे से देखो और सुनो, और फिर एक ऑफिशियल वे के थ्रू जैसे किसी टीचर को अप्रोच करो और उन्हें कहो कि वो उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखें और फिर एक्शंस लें. ऐसा ना हो कि आप, जैसे कि बच्चों के साथ थोड़ा सा जोक चल रहा था, मैंने कहा आप लोग सुपर सोनी की तरह उनको खिड़की से बाहर तो नहीं ना फेंक सकते, उनकी भी रेपुटेशन है. तो मैंने कहा वैसे भी मी टू का टैग जो है वो आपको किसी को लग जाए तो वो लाइफ टाइम टैग होता है. सो व्हाई डोंट वी जस्ट लाइक एक पूरा डायग्नोज से गुजरा जाए कि इज देयर अ प्रॉब्लम और नॉट,
और फिर उसके बाद एक्शन लिया जाए. सो फिर मैंने उसको इस तरह कन्वर्ट कर दिया. वो तो मुझे बाद में सबीन से पता लगा कि असल में मामला कुछ और था. लेकिन अच्छा हुआ कि अगर उसको लाइक पूरी स्टोरी पता लगती तो मे बी वी कुडंट हैंडल, मे बी आई माइट फील ऑल्सो हर्ट. जैसे सबीन को अच्छा नहीं लगा था, वो थोड़ा सा इस बात पे जज्बाती हो गई थी. तो इस तरह फिर मैंने इस तरह हैंडल किया बिकॉज वी हैव टू लाइक, मुझे यही लगा कि हमने बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो देखना है ना. हमने बच्चों का भी देखना है. हमने अगर वो हम जहाँ स्कूल में जा रहे हैं, जैसे आपने वो महरम और ना महरम वाला इशू हैंडल किया, तो हमने स्कूल वालों का भी तो देखना है कि वो क्या चाह रहे हैं. क्योंकि इस तरह जितना हम मिडिल ग्राउंड देखेंगे उतना हमें चांसेस मिलेंगे. सो बच्चों को जब मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया, ये वाला मी टू टैग वाला, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आपके किसी भाई के साथ का आपका कोई इशू है तो वो रिजॉल्व होने के प्रोसेस में है. तो कहीं ऐसा होगा कि आप किसी इवेंट पे जाएं और सबको बताएं कि मेरे भाई ने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया, जब तक कि आपका इशू अभी रिजॉल्व होने के प्रोसेस में. तो कहती नहीं. सो मैंने कहा इसीलिए, हाउ अबाउट यू थिंक द अदर पर्सन, योर टीचर और एनीवन जिसपे आपको गलत वाइब्स आ रही हैं, एज नॉट एज योर ब्रदर और समथिंग बट एज अ ह्यूमन बीइंग, कि पहले उसको देखें, उसको प्रोसेस करें और फिर देखें कि हाँ अगर एक्शन लेने वाली जगह है तो एक्शन लें. सो प्रिंसिपल वाज हैप्पी एंड किड्स वर हैप्पी टू. तो थैंकफुली इस तरह हैंडल हो गया. अगेन I also want to mention another इसी से रिलेटेड, जो वो सबीन बता रही है कि उन्होंने ये भी कहा था कि आप पेरेंट्स को, मैंने कहा, मैं बता रही थी उन्हें कि ये जो इमोशनल अब्यूज होता है या वर्बल अब्यूज होता है, ये आपके पेरेंट्स से भी आ रहा होता है. सो डोंट थिंक कि ये आपको पेरेंट्स से नहीं आएगा. तो यहाँ पे फिर आपको उनको बताना होगा, एक्सप्रेस करना होगा कि आपकी ये चीज मुझे हर्ट कर रही है. अगर वो थोड़ी सी हार्श लैंग्वेज बोलते हैं, उन्हें कि आप आराम से बात कर लें. अगर वो कोई इमोशनली आपको स्नप करते हैं कि आप ग्रेड नहीं अच्छे ले रहे, तो आप उन्हें बता दें. वहां पे फिर दे वांट मी टू लाइक के बच्चे तो पहले ही अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट हैं, तो आप इनको और पेरेंट्स को मजीद अब्यूजर बना दिया है, तो ये तो बच्चे तो फिर बस हाथ से निकल जाएंगे वो. फिर मैंने बच्चों को थोड़ा सा साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करवाई कि पेरेंट्स के, मैंने उनको उनकी सिचुएशन में डाल के कि व्हेन यू हैव योर टेस्ट और आपके सर पे टेंशन होती है और आप इस तरह बात करते हैं, सो हाउ अबाउट यू टेल योर पेरेंट्स कि आप हर्ट हो. सो कैसा हो कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स थोड़े हाइपर हो रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं, तो आप कामली उनसे भी पूछो कि इज एवरीथिंग ओके, आपकी साइड पे सब ठीक है. तो इस तरह फिर ऑब्वियसली फिर वी हैड टू लाइक, जो भी हमें करना था वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से करना था, बिकॉज हमारा मेन टारगेट तो थे ना कि हम बच्चों को अंडरस्टैंड कर सकें. बाकी पेरेंट्स और टीचर आपस में जो भी डिस्कस करते हैं, जो भी अंडरस्टैंड करते हैं, वो एक दूसरे को चैनल करते हैं. हमें तो बच्चों को जो है वो फ्रंट पे लेके आना है और बच्चों को किसी तरह अपने इमोशन और अपनी बातें बताना सिखाना है. सो इसलिए फिर मैंने कोशिश की कि जो भी वो शिकायतें कर रही हैं, जो भी उन्हें इशू हो रहे हैं, कि ये भी बच्चों को बताएं, वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको समझाए जाए. सो दिस इज हाउ वी टैकल इट. ठीक है. अच्छा, I think we should wind up now. Salwa, before going, would you like to make any last comments? कोई final comment में share करना चाहे तो? Not really. I think overall for me it was a very good experience. And I think from the feedback that I've gotten from the children as well, I think as adults we need to stop shifting blame towards parents towards teachers, and I think we have to work together uh, towards protecting our children. तो ये बात, ये मैसेज पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है और टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. देयर इज़ नो मी एंड यू एंड ब्लेम गेम कोई इसमें नहीं है. फॉर द चिल्ड्रन आई थिंक यस, चिल्ड्रन का मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहती बिकॉज इट्स द एडल्ट्स जो हम लोग उनकी लाइफ पूरी जो स्टीयर कर रहे होते हैं वो खुद से इतना नहीं वो अपने डिसीजन ले रहे होते हैं. हमने ही उनके घर का एनवायरनमेंट बनाया होता है, हमने ही उनके स्कूल का क्लास का एनवायरनमेंट बनाया होता है. सो या आई थिंक टीम वर्क फॉर नाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I think one of the things that we missed maybe during this webinar, and one of the things that I really enjoyed doing with the children was जो victim blaming वाला part था. बच्चे when they were leaving, they were just like, oh my god, we learned about victim blaming. They were talking to them each other
कि victim blaming, you know, I will tell my parents what victim blaming is. Teachers were talking about it. कि हाँ, remember they were talking about the Noor Muqaddam case कि उसमें भी victim blaming हो रही है. I think there that was a very important achievement for us. कि ये victim blaming की वजह से ही sexual abuses के cases जो है वो आगे नहीं आते हैं. And for them to actually understand what it is was a major achievement. Yes. Again, that's so cool. Another very important concept. And I'm so glad to hear कि ये बच्चों ने grasp किया है. हमारे भी this was actually one of the questions in the survey as well, Salwa, कि starting हम लोग देखना चाहते थे कि बच्चों को victim blaming का कोई idea है, and we noticed a lot of incorrect answers. And then post workshops हम लोगों ने note किया था कि वो answer change हो गया था. तो I'm so glad to hear कि बच्चों का response overall अच्छा आ रहा है, and we will inshallah continue to conduct these screening sessions for now in Punjab, and then we'll take them onwards into Balochistan and Sindh after getting super translated into the regional languages, inshallah. If जो भी हमारे viewers हैं, अगर आप लोगों में से if any of you want us to come to your school, host an interactive screening session of Super Sony, please get in touch. और अगर आप हमें नहीं बुलाना चाहते और आप खुद से ही स्क्रीनिंग सेशन रखना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो then you can get in touch with us and we'll provide you with the copies of the episodes. I think that's all for now. Let's just wind this up now. It's been great talking to both Salwa and Nageen. Thank you so much for joining us. Thank you so much for having us. Yes. All right then. Bye. Hafiz. Bye.